Hello students, I am Bani, your English facilitator at Learn Forward by Feathercap, and today we'll be discussing the poem The Daffodils by William Wordsworth. Now, uh, the given poem is Wordsworth's most famous work. It was inspired by an event in which Wordsworth came across a long belt of daffodils. Let's read the poem. So, this poem is written by a famous poet, Wordsworth, and this is his piece of art. Piece of art. This is one of his best works. So it is inspired by the fact that he went to a place where he saw a long belt of beautiful daffodils. Daffodils होते हैं बहुत सुंदर सुंदर goldenish yellow flowers जो उसने देखे थे. That inspired him to write this beautiful piece of art or his poem. Now, I wandered lonely as a cloud. Now the poet compares himself to a cloud. I wandered lonely as a cloud that flows on high over vales and hills. So now the poet Wordsworth is saying that he was wandering lonely, he was wandering alone like a cloud. एक क्लाउड जो अकेला घूमता रहता है पूरे आसमान में घूमता रहता है ओवर वैलीज वेल्स मतलब वैलीज एंड हिल्स जो अकेले ट्रैवल करता रहता है पूरे स्काई को. ऐसे ही जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ही वाज ट्रैवलिंग एंड ही वाज वॉन्डरिंग और ही वाज फिलैंडरिंग लोनली एज अ क्लाउड जो फ्लोट करता है ओवर वैलीज एंड हिल्स. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड. वो कहीं से जा रहे थे, ही वाज अलोन, he was not with any sort of company, he was wandering lonely. जैसे clouds होते हैं, जैसे clouds ऊपर से sky में valleys और hills के ऊपर से निकलते रहते हैं. When all at once I saw a crowd, जब उसे एक बहुत बड़ी भीड़ दिखी. अब crowd किस चीज का? लोगों का crowd नहीं, a host मतलब एक बहुत ज्यादा crowded area of golden daffodils. किसका? लोगों का नहीं, एक बहुत बड़ा क्राउड दिखा बट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. तो इसमें ही हैज personified the flowers डैफोडिल्स. ठीक है, पर्सोनिफाई कर दिया है डैफोडिल्स को कि एक क्राउड दिखा ऑफ डैफोडिल्स. अब क्राउड तो होता नहीं प्लांट्स का, क्राउड तो ह्यूमंस का होता है ना. सो ही हैड पर्सोनिफाइड मतलब कि ह्यूमैनिफाई कर दिया है. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज. तो कहाँ पे दिखे उन्हें गोल्डन डैफोडिल्स? लेक के पीछे और ट्रीज के भी नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग जैसे कोई बर्ड्स वगैरह फ्लटर करती है ना, जैसे कोई बटरफ्लाइज वगैरह फ्लटर करती हैं. एंड डांसिंग जैसे ह्यूमंस डांस करते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे मौसम में ब्रीज में, ऐसे वो फ्लटर कर रहे थे. और वो बहुत सारी बहुत सुंदर बेल्ट थी ऑफ ब्यूटिफुल येलोइश गोल्डन डैफोडिल्स जो बहुत सुंदर हवा में लहरा रहे थे. इससे हमें पता लगता है, फ्लटरिंग इन दी ब्रीज से हमें पता लगता है जो वहाँ पे मौसम था उस टाइम पे, इट वाज वेरी गुड, इट वाज बिल्कुल ब्रीजी टाइप का मौसम. सो द गोल्डन डैफोडिल्स वर फ्लटरिंग continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. तो जैसे आसमान में जो मिल्की वे में एक साथ बहुत सारे स्टार्स शाइन करते रहते हैं ना, एक साथ एक कंटिन्यूस वे में, एक कंटिन्यूस पाथ में जैसे स्टार्स ऐसे शाइन करते रहते हैं. ऐसे ही वो बहुत सारे डैफोडिल्स एक सेम पाथ में शाइन कर रहे थे. दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन. ऐसे लग रहा था कि ये कहीं पर जाकर खत्म ही नहीं होंगे, पूरे एरिया में सिर्फ डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स है. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक बिल्कुल बे के एज पे भी ये चल रहे थे. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस. वो ही इज एग्जैजरेटिंग का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना. ही इज एग्जैजरेटिंग इन सेइंग कि I thought that I saw 10,000
beautiful yellowish golden daffodils at a glance. एक बार में 10,000 दिखे, tossing their heads in sprightly dance. और इतना अच्छा मौसम था कि वो अपने हेड को ऐसे ऐसे हिला रहे थे, मतलब वो झूल रहे थे. The waves beside them danced. जो waves थी ना, क्योंकि they were beneath the tree and beside the lake, तो जो लेक था ना उसके अंदर जो वेव्स आ रही थी, जैसे यहाँ पे लेक है पानी का, तो इसमें जो वेव्स आ रही थी, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. तो इन वेव्स से पता लगता है हैप्पीनेस का, पर जैसे ये अपने अपने हेड को ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे थे, इससे ऐसे लग रहा था कि ये वेव्स भी इनके सामने फीकी पड़ रही हैं. A poet could not be but gay in such a jocund company. तो could not be gay का मतलब होता है happy. एक पोएट ऐसे चीज को देखकर, ऐसे नेचर के इतने ब्यूटीफुल व्यू को देखकर खुश नहीं होगा तो क्या होगा. इन सच अ जोकंड कंपनी. जोकंड का मतलब होता है मैरी. ऐसी हैप्पी कंपनी में अगर एक पोएट खुश नहीं होगा तो क्या होगा. ही विल बी द हैप्पीएस्ट इन सच अ नेचरिस्टिकली ब्यूटीफुल कंपनी. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट. और मैं देखता रहा उन डैफोडिल्स को. आई कुड नॉट इवन शिफ्ट माई आईज अवे फ्रॉम दोज डैफोडिल्स बिकॉज दे वर सो ब्यूटिफुल. दे वर लुकिंग सो 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 गॉर्जियस दैट आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ देम. तो आई गेज्ड एंड गेज्ड, मतलब मैं उन्हें देखता ही रहा, बट मैंने ये सोचा भी नहीं कि उन उन डैफोडिल्स ने मेरे को क्या हैप्पीनेस और क्या वेल्थ लाई. अब वेल्थ का यहाँ पर मनी वाला मतलब नहीं है कि मेरे को पैसे मिल गए उन्हें देखकर, नहीं, बट एक हैप्पीनेस एट हार्ट. दिल खुश हो गया, दिल कंप्लीट फील कर रहा था उनको देखकर. एंड जो ब्यूटी नेचर ने उसको प्रोवाइड करी उस टाइम पे, ही वाज सो हैप्पी टू सी दोस डैफोडिल्स दैट ही हैड नेवर थॉट दैट ये जो व्यू था वो उसको इतना कंप्लीट और इतना सेटिस्फाइड फील कराएगा that he would always have that in his mind. वो जो पिक्चर थी of those daffodils वो हमेशा के लिए अपने दिमाग में बनाकर रख लेगा. For off when on my couch I lie. For off मतलब for often, जब भी मैं अपने काउच पे, जब भी मैं अपने सोफे पे बैठता हूँ, in vacant or in pensive mood. Vacant मतलब जब मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ, और पेंसिव मूड मतलब जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ. दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई. और वो बिल्कुल दैट इनवर्ड आई मतलब मेरे माइंड की इमेजिनेशन में वो ब्यूटीफुल सा व्यू आ जाता है उस डैफोडिल्स का, जो मैंने 10,000 डैफोडिल्स ऑलमोस्ट देखे थे उस दिन, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. और वो मेरे को इतना खुश कर देते हैं, इतना हैप्पी, इतना मेरी कर देते हैं एक ही पॉइंट पे. एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स. और उनको रिमाइंड करके, उन चीजों के बारे में सोच के अगेन एंड अगेन मेरा दिल इतना ज्यादा खुश हो जाता है और इतने ज्यादा प्लेजर से भर जाता है. एंड डांसेस विद दोस डैफोडिल्स. और उन्हीं डैफोडिल्स के साथ मेरा दिल भी डांस करने लग जाता है. और जैसे वो अपना ब्रीज में अपने हेड को टिल्ट एंड टर्न करके डांस कर रहे थे, ऐसे ही उनके बारे में सोच करके मेरा भी मूड बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाता है, बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है. एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड ओवरजॉयड. सो this was a very beautiful poem. It shows that how much beauty nature possesses and how beautiful nature is. कि नेचर की जो चीजें होती है, भगवान ने जो चीजें क्रिएट करी है, द थिंग्स दैट गॉड हैज क्रिएटेड आर सो ब्यूटीफुल कि आप और किसी भी चीज में, कोई मैनमेड चीज में इतनी ब्यूटी नहीं पा पाओगे जो ब्यूटी नेचर की चीजों से आती है. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज हैप्पीनेस? Glee. Which of the following words is correctly spelled? Fluttering. The daffodils are seen beside the lake. The poet wandered lonely as a cloud. The daffodils float over the hills. True. What is fluttering and dancing in the breeze? The daffodils. Write the rhyming words of the following from the extract. Cloud का हो गया crowd. I wandered lonely as a cloud when all at once I saw a crowd. So crowd. And trees का हो गया breeze. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So trees का हो गया breeze.
Now, what is referred to them in the line? Let's read that again. The waves beside them danced, beside the daffodils. The waves beside them danced. A poet could be gay, true. A poet could be happy. Explain the line, what wealth the show to me had brought. What wealth the show to me had brought, matlab, what happiness the show, the daffodils, the line of those daffodils had brought to me. जो feeling of satisfaction है, जो happiness है, जो daffodils ने उसको लाई है, this is what the meaning of what wealth the show to me had brought. Now write the rhyming word of thought from the extract. But little thought what wealth the show to me had brought. So the answer is brought. Now, take the correct option. What view of nature is presented in the poem? Nature is powerful, nature can bring hatred, it can do things to the mind, or nature is relied on to make people feel better. So the answer is nature is relied on to make people feel better. What was the poem inspired by? Animals, nature, or happiness? The answer is nature, of course. What does the phrase sprightly dance mean? Depressing, lively and full of energy, or slow and cautious? The answer is lively and full of energy. Now, a host of golden daffodils. Here, a host means a large number. Now, let's come to the question and answers. Answer the following questions. In contrast to his own situation, what does the poet sees? The poet, he was wandering lonely as a cloud, but then he came across so many beautiful daffodils, and his situation totally reversed or changed, and he was so overjoyed by the company that he was with, the company of those daffodils. How does the poet personify or give the daffodils a human character? The poet personified the daffodils by saying that they were fluttering and dancing like humans do. And the next is that, yeah, so that was it. And that they were sparkling in glee. Now, what words and phrases does the poet use to tell you about the large number of daffodils he saw? He said a line, 10,000 I saw at a glance. So this was the line that tells us about the large number of daffodils he saw. Now, how do you know that the poet kept looking at the daffodils for a long time? So, he said 10,000. He said 10,000 saw. Sorry. He said 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling glee. A poet could not be gay in such a jocund company. I gazed and gazed. This is the line that tells us that he was just gazing at the daffodils endlessly, and he was not about to give up gazing on them. So he kept looking at them for a very long time. I hope you guys understood the poem and you guys loved it. Thank you for listening and happy learning. Goodbye.